जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवा गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोरनंदन जगजानरंजन यशोरनंदन जगजानरंजन जमुन तीरा वंशोदी जमुन तीरा वंशोदी जय राधा माधव कुंजयादी जय राधा माधव कुंजयादी गोपी जनवा गिरिवर गोपी जनवा गिरिवर यशोरनंदन जगजानरंजन यशोरनंदन जगजानरंजन जमुना कौन दीन यमुना तीरा वनचारीन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitya Gauriyo, Hariyo, Hariyo, Nitya Gauriyo. Jayam Vishnupada Paramahamsa 𝐒𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐰𝐬𝐴 Divine Grace. ISKCON founder Chair Jagat Guru Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jayam Vishnupada Paramahamsa 𝐒𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐰𝐬𝐴 Divine Grace. Sri Bhaktivedanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai. Ananda Guru Vaishnavrinda ki jai. Namacharya Sri Haridas Thakur ki jai.
Praise Shri Guru Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopal Gopinath Shyama Kund Radha Kunda Giri Garodhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Ganges Mai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Ram Navam Ki Jai. Shri Sitaram Lakshman Hanuman Ki Jai. Ramachandra Bhagavan Ki Jai. Nitai Gopimanandi. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. Glories to glories, all glories to Shri Guru Sri Gauranga. Namo Vishnu Padya Krishna Krishna Bhutale Srimati. यहाँ पे जो प्रवचन होगा वो महाराज अंग्रेजी में देंगे और उसका हिंदी अनुवाद भी यहाँ पे किया जाएगा। जो और सभी लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ कर लें। कक्षा के दौरान कोई अपने मोबाइल फोन को ना उठाए, बात ना करे और मंदिर प्रवचन में शांति बनाइए और सेल्फीज मत खींचिए। यहाँ पर सेल्फी खींचना, फोटो खींचना मना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरामपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगनो ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामचंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। We have been looking at the lesson Sri Lord Ramachandra has been teaching in his advent. So we will continue. हम पिछले कुछ सत्रों में भगवान रामचंद्र के जीवन से शिक्षाएं सीख रहे थे और हम उन्हें जारी रखेंगे। Everything the Lord did is a lesson. भगवान जो भी कहते हैं वह शिक्षाप्रद है। Not just activity. Everything is for our benefit. सिर्फ भगवान की क्रियाएं ही नहीं, सब कुछ भगवान के बारे में हमारे लाभ के लिए है। Ramachandra was about crossing the ocean.
भगवान राम समुद्र पार करने वाले थे and the personality in charge of the water didn't recognize Ramachandra. और जो समुद्र देव है वरुण देव उन्होंने भगवान राम को पहचाना नहीं. Not out of ignorance. It is meant for the Lord to show his supremacy. Some of the activities the Lord did, it is for teaching lesson, not just because of ignorance. ऐसा नहीं था कि समुद्र देव ने अज्ञान के कारण भगवान को पहचाना नहीं, बल्कि श्री राम की भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं, ताकि भगवान ऐसी लीलाएं कर सके जो कि शिक्षाप्रद हो. Some of the activities the Lord performed is ignorance. Not his activities are not ignorance, but devotees who misunderstood are in ignorance. So to Lord Ramachandra's desire, yes. The Lord became very angry and he wanted to dry up the ocean. जब समुद्र ने भगवान राम की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया तो भगवान राम बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोध में वे समुद्र को सुखा देना चाहते थे. The ocean god, he realized and came to his senses and came to beg, please excuse my ignorance. जब समुद्र देव को अपनी गहती का एहसान हुआ तो वे भगवान के पास आए और क्षमा प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान मेरी अज्ञानता को क्षमा कर दीजिए. You are the supreme personality of Godhead. आप स्वयं भगवान हैं. Worshipped by Brahma, Lord Shiva and all the demigods. ब्रह्मा आदि देव आपकी पूजा करते हैं. You are very merciful and kind to those who surrender to you. आप बहुत ही दयालु और कृपालु हैं उनके ऊपर जो आपकी शरण लेते हैं. In Nasik, very old temple of Lord Ramchandra is there. नासिक में भगवान राम का एक बहुत पुरातन मंदिर है. In this temple, Lord Ramchandra is standing like this. इसमें भगवान इस मुद्रा में खड़े हैं. His hand is pointed to his feet. भगवान ऐसी मुद्रा में खड़े हैं कि उनका एक हाथ उनके चरणों की ओर. Anyone from anywhere who comes here to me and said, I am yours, that very moment I have said that devotee, mine. So the ocean god said, you are very, very merciful to your devotees. I am one of such devotees. Please excuse my foolishness. भगवान राम ऐसा बता रहे हैं उस मंदिर में कि कोई भी अगर मेरी शरण लेता है तो मैं उसी क्षण उसे स्वीकार कर लेता हूँ. तो समुद्र देव भी यही प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकारिए. My water is not an obstruction to your deed. Nothing can be an obstacle for you. Nothing. But I want you to establish a history that will be followed by all the kings of the world. People should know your supremacy. And for that, I will request you to construct a bridge over my water. Do it. It's good for me. It's good for everybody. समुद्र देव ने कहा कि भगवान मेरा समुद्र का जल आपके लिए किसी भी प्रकार से बाधा नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपकी भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए और एक ऐसा इतिहास रचने के लिए
जो कि अनंत काल तक राजाओं द्वारा पालन करा जाएगा, मैं ऐसी बाधा दे रहा हूं। आप मेरे समुद्र के जलों के ऊपर एक पुल का निर्माण कीजिए। Ramachandra accepted. Yes, I will do that. He did not use cement. No marble. No iron rods. Nothing. The Lord showed his supremacy that he can do what no one else can do. भगवान राम ने स्वीकार किया कि मैं पुल बनाऊंगा। उन्होंने ना तो संगमरमर, ना लोहा, ना ही सीमेंट का उपयोग किया। उन्होंने सिद्ध किया कि वे भगवान हैं और वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो और कोई भी नहीं कर सकता। There are so many construction engineers everywhere in the world, including the architect or the demigods. संसार में इतने सारे शिल्पकार हैं विश्वकर्मा जी को मिलाकर। Vishwakarma, he has brain. He has brain. Yes. विश्वकर्मा जी बुद्धिमान है, But he cannot do what the Lord can do. He cannot. लेकिन वो नहीं कर सकते जो भगवान ने किया। His intelligence and ability is given by Lord Ramachandra. उनकी बुद्धि भगवान राम नहीं दी है। So the Lord, let me show you my supremacy. तो भगवान अपनी भगवत्ता दिखाना चाहते थे। So he called his associate. Let us construct a bridge over this ocean. उन्होंने अपने संजय को बुलाया, आइए हम इस समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण करते हैं। Immediately upon the order of the Lord, all the vanaras, they became very ecstatic. भगवान का आदेश पाकर सभी वानर एकदम उत्साहित हो गए। Devotees are very eager to do service. They are eager for service. भक्त भगवान की सेवा के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। So devotees, out of love for Krishna, they want to serve. भगवान से प्रेम के कारण भगवान की सेवा करना चाहते हैं। They were lifting big chunk of stones from everywhere in the world. It is not that time. It is not Bharatvarsa is not only this tract of land, India. It's the whole world. उस समय भारतवर्ष संपूर्ण विश्व कहलाता था और इन वानरों ने सारे विश्व से बड़े बड़े पर्वत उठा के ले आए। So please don't look like this. So look like this. ऐसे मत देखें, ऐसे देखें। भारतवर्ष इतना बड़ा This is Krishna consciousness, the whole universe. So meaning that all over the world, the monkeys were getting the stones from all over the world. तो ये वानर सारे विश्व से पर्वत लेकर आ रहे थे। Is it difficult to understand? क्या ये समझने में कठिन है? Difficult? From Africa? You bring stone here to build? Can you carry? क्या आप में से कोई अफ्रीका से पत्थर लाके लंका में समुद्र बना सकता है? Can you carry that? क्या हम ला सकते हैं? So it was not just that the stones were waiting by the bank of the ocean. No, it's all over the world. It was spread all over the world. ऐसा नहीं था कि ये पत्थर समुद्र के तट पर थे, ये पत्थर सारे विश्व से लाए गए थे। The activities which we do on the body, हम शरीर से जो कार्य करते हैं, the activities which are performed on the mind platform, जो हम अपने मन से कार्य करते हैं, and the spiritual activities, और जो हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, the speed of the body, the speed of the mind, and the speed of the spirit are not the same. हमारे शरीर की, मन की और आत्मा की गति समान नहीं है।
Just what is this? वानर हंस रहा था कि यह तो सबसे हास्यास्पद चीज मैंने सुनी है, क्या बात कर रही है। The squirrel say, well, it can be funny for you, but for me, it's a reality. ये तुम्हारे लिए हास्यास्पद हो सकता है लेकिन मेरे लिए सच है। I will do my service. मुझे मेरी सेवा करने दो। So one of the monkeys तो एक वानर used his tail अपनी पीठ से and picked the squirrel, उस गिलहरी को उठाता है threw the squirrel और away. उसको दूर फेंक देता है। Get out of the way. हट जाओ हमारे रास्ते से, Don't disturb our service. हमारी सेवा को बाधा मत करो। The squirrel was chanting Jai Sri Ram, Jai Sri Ram, Jai जय Sri श्री Ram, राम, जय श्री राम, राम Ram, Ram, राम 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 राम। ऐसा गिलहरी कह रही थी। As he was chanting Ram, जैसे वो भगवान का नाम ले रही थी, the squirrel fell in the hand of Ramachandra. वह गिलहरी भगवान राम के हाथों में जाके गिर पड़ी। So Ramachandra saw the squirrel, भगवान राम ने उस गिलहरी को देखा place him in his chest. और उसे अपने हृदय के पास लगा लिया। You are so dear to me. तुम मुझे इतनी
provided the interest is there. अगर उसके मन में इच्छा है तो Let everyone have the chance to serve the Lord. हर किसी को भगवान की सेवा का अवसर मिलना चाहिए, Because क्योंकि the Lord is the Father of all living entities. भगवान सभी जीवात्माओं के परम पिता है। Srila Bhaktivinoda Thakur said, everyone has the right to serve the Lord. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हर किसी को भगवान की सेवा करने का अधिकार है, Because we are all Krishna's parts and parcels. क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। So let everyone be given chance to serve the Lord. इसलिए सबको भगवान की सेवा का अवसर प्रदान करना चाहिए। It is not our ability in doing things that ये matters. हमारी क्षमता नहीं है चीजों को कर पाने की, It is not our expertise in doing things. ये हमारी दक्षता नहीं है कार्य को कर पाने की। What is supporting everything is the love. जो इन सबको आधार बना के जोड़े हुए हैं वो है प्रेम। The squirrels has love for me. इस गिलहरी के पास मेरे लिए प्रेम You है, have love for me. तुम्हारे पास मेरे लिए प्रेम है। So what is the problem? तो इसमें परेशानी क्या है? Your problem is false ego. परेशानी है अहंकार। Don't think that मत सोचो what you are doing, कि जो तुम कर रहे हो nobody can do it. वो और कोई नहीं कर सकता, Anybody can do it. कोई भी ये कर सकता है। Anything anybody is doing today, कोई भी जो कुछ भी कर रहा है आज, tomorrow कल you get somebody who will do it better than you. कोई और उससे अच्छा करके दिखा देगा। Therefore, इसलिए no one should be proud of what we can do. कोई भी जो कर पा रहा है उसके लिए घमंड नहीं होना The चाहिए। Lord does not accept the things we do. भगवान हम जो करते हैं उसे नहीं स्वीकारते, He accepts the love that we have for Him. भगवान हमारे प्रेम को स्वीकारते हैं। Patam puspam phalam prayam yome bhaktya prayachati tad aham upad bhaktya asnami prayata atmanam. These are simple things that are available anywhere, everywhere. ये बहुत ही आम सी चीजें हैं जो कहीं भी आसानी से मिल जाती हैं। And Srila Prabhupada translated श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते, तात्पर्य में लिखते हैं, prayata atmanam. Asnami prayata atmanam. अष्टामी प्रतात आत्मनाम। Srila Prabhupada translated it. प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं, Asnami, I accept. अष्टामी का अर्थ मैं स्वीकार करता हूँ, Prayata atmana. प्रतात्मना From a person in pure consciousness. उस व्यक्ति से जिसकी चेतना शुद्ध है, Not just the items. उन चीजों को नहीं, Not the items. चीजों को नहीं स्वीकारता मैं Consciousness मैं चेतना को स्वीकारता is हूँ। what Krishna is accepting. यह भगवान कह रहे हैं। So Krishna said, Jat karoshi, just asasi. भगवान कह रहे हैं यत करोषि यत अश्नासि, Whatever you do, तुम जो भी करो, whatever you offer, तुम जो भी अर्पण whatever करो, charity you may give, तुम जो भी दान दो, or the austerity which you may perform, तुम जो भी तपस्या करो, do it as an offering to me. वो मेरे लिए करो। Whoever does that जो भी यह करता है with love प्रेम से is dear to the Lord. मुझे बहुत प्रिय हो जाता The है। squirrel is very, very dear to the Lord. यह गिलहरी मुझे बहुत प्रिय है। The monkeys were not in the hand of Lord Machandra. वानर भगवान राम के हाथों में नहीं थे, The squirrel was in the hand of the Lord. गिलहरी थी भगवान के हाथों में, And he placed the squirrel on his chest. और भगवान ने उसे अपने हृदय के पास रखा। Say, you are very dear. तो वह भगवान को बहुत प्रिय थी।
others. अपनी भक्ति को दूसरों को विचलित करने We के लिए should उपयोग करें। perform our Krishna consciousness in such a way that others are encouraged. हमें अपनी भक्ति ऐसे करना चाहिए कि दूसरे भी देख के उसको प्रेरित हो। That is Krishna consciousness. इसे भक्ति कहते हैं। So Lord Ramachandra told the monkeys, भगवान राम ने मानवों से कहा, I am captured by the love of the squirrels. मैं इस गिलहरी के प्रेम से वश में आ गया हूँ। Your wonderful service is wonderful because of the support of the squirrels. तुम्हारी अद्भुत सेवा अद्भुत है क्योंकि यह गिलहरी भी इसमें सहयोग कर रही है। So let me ask you one question. तो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। How many of us here, हम में से कितने लोग, you one person will have tumultuous kirtan? एक व्यक्ति अकेले अद्भुत एकदम पावरफुल कीर्तन कर सकता है अकेले? You play mridanga, आप ही मृदंग बजाइए, play kartalas at the same आप ही time, करताल बजाइए, you sing at the same time, आप ही गाइए and you dance at the same और time. आप ही नाचिए। How many of us can do like that? हम में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? कोई? To have a tumultuous kirtan means what? All of us together. संकीर्तन के लिए हम सबको साथ में आना पड़ेगा। 𝐾𝐻 Goswami described कृष्णास कविराज गोस्वामी कहते हैं 7 mridangas, 7 मृदंग, 14 kartas, 14 करताल, different sampradayas. अलग अलग संप्रदाय, They all joined together वे सभी एक साथ आए in Jagannath Rath Yatra. जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। Then the kirtan became tumultuous. और उन्होंने जब कीर्तन किया तब अद्भुत संकीर्तन था। All the strength put together. यह सब एक साथ मिलाकर, And Lord Jagannath was happy. भगवान चैतन्य बहुत प्रसन्न हुए। And Chaitanya was dancing. भगवान चैतन्य नृत्य कर रहे थे। In every group there is a dancer. हर एक मंडली में नृत्य कर रहे थे। There is a singer. एक गायक था, The instrumentalist. एक, All of them put together. वे सब मिलाकर The kirtan became tumultuous. यह संकीर्तन अद्भुत हो गया था। The monkeys became very humble. वानर बहुत विनम्र हो गए And they learned the lesson. और उन्होंने अपना पाठ सीख लिया। This activity Lord Ramachandra performed while he was here यह जो अभी हमने भगवान की क्रिया को बताया, to teach us lesson. हमें एक पाठ सिखाने के लिए What is practical devotional service? कि भक्ति क्या है, What is offerable and that which is not offerable? क्या भगवान स्वीकारते हैं और क्या भगवान नहीं स्वीकारते। The devotional service has to be measured भक्ति परिपक्व होनी चाहिए। to see where we are going. हमें देखना चाहिए हम किस ओर जा रहे हैं। Ramachandra did. He did भगवान राम ने by showing us the way. भगवान राम ने सिखाया वाणी के माध्यम से, Personal life. अपने चरित्र से, अपने जीवन से। When his father asked him to go to the forest, जब उनके पिता ने उन्हें वनवास जाने का आदेश दिया, he did not protest. उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, He accepted. उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। Yes, I will go. मैं जाऊंगा। And Lakshman said, I will go with you. लक्ष्मण ने कहा मैं भी वही करूंगा जो आप करेंगे। Lord Ramachandra said, you are not asked to go to the forest. लॉर्ड राम ने कहा कि आपको नहीं जाना जंगल, आपको नहीं पूछा गया, Don't worry, stay here. तो आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं रुकिए। Lakshman said, लक्ष्मण ने कहा yes, I was not asked to go to the forest. हाँ, मुझसे नहीं पूछा गया वनवास में जाने के But लिए, please tell me one thing.
लेकिन मुझे एक बात बताइए, What is the duty of a servant? एक सेवक का धर्म क्या है? Just do service. So if I stay here, what will I do? तो सेवक का धर्म है अपने स्वामी की सेवा करना। मैं यहाँ रुकूंगा तो क्या करूंगा? भीष्मदेव he was teaching Yudhishthira Maharaj how to rule. युधिष्ठिर महाराज को सिखा रहे थे कैसे शासन करें। One of the things he told him was, एक चीज उन्होंने बताई, a servant should never give up the master. एक सेवक को कभी स्वामी को त्यागना नहीं चाहिए। So Lakshman said, I have to follow you. तो लक्ष्मण ने कहा मैं आपके साथ आऊंगा। Ramachandra said, okay, all right. भगवान राम ने कहा ठीक है आ जाओ। Okay. ठीक है। And Sita Devi came forward. सीता जी आगे आई। So I'm going with you. मैं भी आपके साथ चलूंगा। Lord Ramachandra said, no. भगवान राम ने कहा नहीं, The forest is not for women. वन स्त्रियों के लिए नहीं है। The forest is not for women. स्त्रियों के लिए वनवास नहीं है। And you have been brought up in the palace. और तुम तो एक राज्य में एक, You don't have the experience of forest life. तुम्हें तो एक राजमहल में पला बड़ा करा गया है। There is no air condition there. के जीवन के लिए नहीं है। There is no air condition there in the forest. वहाँ पर एसी नहीं होता। There is no fan there in this one. वहाँ पे झरने नहीं होते। No microphone there. वहाँ पे माइक्रोफोन भी नहीं होता। So you find all this. तुम वहाँ पे क्या करोगे? So please stay here. तो इसलिए यहीं पर रुको। I will go and I'll come back for you. मैं जाता हूँ और वापस आऊंगा। And Sita Devi said, सीता मैया ने कहा I am your wife. मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। My father मेरे पिताजी ने gave me to you मुझे आपको सौंपा था to serve you. आपकी सेवा My करने father के did लिए। not ask me to stay with my father-in-law. मेरे पिताजी ने मुझे अपने ससुर के साथ रहने के लिए नहीं कहा था। My father asked me to serve you. उन्होंने आपकी सेवा करने के लिए कहा था। इसलिए If I stay here, मैं यहाँ रुकूंगी तो what will I do? मैं क्या करूंगी? So I have to go with you. मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा। Take me. मुझे नहीं I चलना, must go with you. मैं आपके साथ ही जाऊंगी। Prabhupada said, श्रील प्रभुपाद कहते हैं yes, this is the duty of a chaste woman. ये एक सती स्त्री के लक्षण है। What is the duty of a chaste woman? सती स्त्री का अर्थ क्या है? She will accept the husband when everything is alright. वे अपने पति को स्वीकार करेगी जब सब कुछ ठीक है, She will also accept the husband when everything is not alright. और तब भी जब सब कुछ खराब है। That is a chaste wife. वो एक सती स्त्री के लक्षण है। That woman वह स्त्री has the power के पास to close down the universe if she wants. शक्ति होती है पूरे ब्रह्मांड को Chastity. ध्वस्त कर पाने की। Power. उसकी सतीत्व से उसको इतना शक्ति मिलती है। So Sati, Sita Devi सीता देवी is a chaste lady. एक सती स्त्री है। I will follow you मैं आपके साथ ही जाऊंगी in any condition. किसी भी परिस्थिति में। You are my husband आप मेरे पति हैं for this lifetime. इस जीवन में, Either good or bad. You are my husband. और My duty is to serve you. आप मेरे पति हैं इसलिए मेरा धर्म है So I आपकी will सेवा go with करना। you. तो मैं आपके साथ जाऊंगी। Lord Ramachandra is using Sita Devi to teach us भगवान राम यहाँ हमको सिखाते हैं what is the nature of a chaste woman. एक सती स्त्री के लक्षण क्या है। Follow the husband in all circumstances. अपने पति को हर परिस्थिति में साथ देना। A faithful servant एक सेवक must serve the master in all circumstances. अपने स्वामी की हर परिस्थिति में सेवा करता है। Even if the master is demonic, अपितु स्वामी राक्षसी हो a Shudra's business is to serve. फिर भी उसका कर्तव्य है सेवा करना। If he does that service, अगर वह सेवा करता है he will be promoted. तो उसकी उन्नति हो जाएगी, Because this is a Shastric injunction. क्योंकि ये शास्त्रों का कथन है। So the Lord is establishing a principle for the whole world to follow.
तो भगवान एक ऐसा सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं जिसे सारा विश्व पालन करेगा। Be a faithful servant. कि एक जो सेवक होता है and everything will be auspicious. अगर आप अच्छे सेवक हो तो सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Comment, question? कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न? Thank you very much, Maharaj, for the wonderful class. Maharaj, many times when we see in our scenario, especially in ISKCON scenario, we have many masters. We have many spiritual authorities, managerially, spiritually, senior Vaishnavas. So sometimes it becomes very tough to understand in a situation how to serve, because sometimes the masters, interest-wise, there may be some clashes in our service. So how to deal with such situation, Maharaj? प्रश्न ये है कि हमारे ISKCON में हमारे अलग अलग स्वामी होते हैं। कभी हमारे जो मैनेजरियल अथॉरिटी होते हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी होते हैं, हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, और कभी कभी उनके बीच में भी सेवा को लेकर कुछ मतभेद होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कैसे सेवा करनी चाहिए? हरे कृष्ण। सभी से अनुरोध करेंगे कि कृपया शांति बनाए रहे ताकि प्रवचन में बाधा ना हो। टेम्पल प्रेसिडेंट, हमारे मंदिर अध्यक्ष होता है, कमांडर, मंदिर का कमांडर होता है, टेम्पल कमांडर, HODs होते हैं, आश्रम का इंचार्ज होता है, GBC होते हैं, दीक्षा शिक्षा गुरु होते हैं, काउंसलर होते हैं। Whom should we follow? हम किसका पालन करें? Right? It's a obvious question. It depends on the nature of the instruction. ये हमारी सेवा के स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। ये आदेश के स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। If the HOD, अगर HOD, he is the one directly in charge of your life. यहाँ पे डायरेक्टली इंचार्ज है। He has given you a service. Today you should go on Sankirtan. और उसने सेवा दी है कि आज आप संकीर्तन में जाइए। If a GBC comes in, अगर GBC आते हैं, so I want you to go to Mumbai today for me. और कहते हैं आज आप मेरे साथ बम्बई चलिए। If you can, अगर आप tell the GBC से कह सकते हैं, I have already been given service today. मुझे पहले ही सेवा दी जा चुकी है, But since we have another service for me, लेकिन क्योंकि आप मुझे दूसरी सेवा दे रहे हैं, please talk with my HOD. कृपया करके मेरे HOD से बात करिए। Is it difficult? क्या ये कठिन है? Is it difficult to do? If it is difficult, अगर ये कठिन है, go to the HOD. तो HOD के पास जाइए।
and explain. और उसे समझाइए Today, I was to go to Sankirtan. कि आज आपने संकीर्तन में जाने के लिए कहा था, The GBC said I should go to Mumbai today. लेकिन जीबीसी कह रहे हैं मुंबई जाऊं, So what should I do? तो मुझे क्या करना चाहिए? You have done your part. आपने दोनों को बता दिया है, So it is duty to go to the GBC and resolve it. तो ये एचओडी का कर्तव्य है जीबीसी के Then बाद come back and tell you what to do. और वापस आके आपको बताना, Then you do that. और वो आप करिए, So you are free. तो आप स्वतंत्र हैं। Does it make sense? इसमें We should not unnecessarily put ourselves in anxiety. What should I do? GBC said this. HOD said this. What should I do now? No. Go to them. Let it be ironed out. So both of them should conclude and tell you one thing. Krishna told Arjuna, please, can you tell me one thing so that I can focus? So you do the same thing. हमें व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए, दोनों को बता दें, वे दोनों आपस में चर्चा करके बताएंगे एक कार्य जो आपको करना है। So both of you should discuss it and tell me one thing so I can do. And when they do that, they will give you instruction. Okay, you go to Mumbai. So you're free. You go there. Free. तो उन दोनों को चर्चा करके आपको बताने दीजिए क्या करना है। Ideally, if we are responsible leaders, अगर हम रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं तो we shouldn't give instruction to a devotee in the temple. We should go to the leaders and tell them, I have this service. Do you see a devotee who can do this for me? हम सीधे मंदिर के भक्तों को सेवा नहीं देंगे, हम मंदिर के लीडर के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि ये सेवा है कि आप मुझे कोई भक्त दे सकते हैं जो इसे कर सके। So the HOD who is assigning services to different devotees, he will be able to decide who should do that service for him and it's finished. तो वह भक्त जो सबको सेवा दे रहा है उसे निर्णय लेना चाहिए कि किसे क्या सेवा करनी है। Right? Hare Krishna. Thank you Maharaji for such a wonderful and enlightening class. Maharaji, I wanted to ask about assumption. You are telling that like we make a lot of mistakes like Mother Parvati did. So then, but sometimes if others are also making assumption and then we become disheartened if they are making statements like you don't want to serve or like that. Sometimes, so how we can take it and what can be the correct measures to deal with that? And Correct measure for? we become disheartened if others say statements like you don't want to serve. Your service was failure, you don't want to serve. Others are saying like that. How we can take it that we are not coming under assumptions and maybe other parties also assuming a lot and First of all, we should understand that what 90% of what we think of people is wrong. 90%. 90%. Yes, of what we think about somebody is wrong. प्रश्न ये था कि महाराज आप सुबह बता रहे थे कि हमें दूसरों के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूसरे हमारे ऊपर अनुमान और दोषारोप करते हैं, तो हमें इस परिस्थिति से कैसे कार्य करना चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि हमें एक बात समझनी चाहिए कि अधिकतर परिस्थिति में 90% हम दूसरों को गलत समझते हैं। So one experienced philosopher said, what you think about me is none of my business. एक दार्शनिक कहते हैं कि आप जो मेरे बारे में सोचते हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। What you think about me, that is your problem, not my problem. तुम जो मेरे बारे में सोचते हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। And I shouldn't make it my problem. और मुझे इसे अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। You can't stop people from thinking about you.
आप दूसरों को आपके बारे में सोचने से नहीं रोक सकते, but you have the power to accept or not accept it. लेकिन आपके पास उनकी सोच को स्वीकारने और ना स्वीकारने की शक्ति है. Nothing becomes a problem only when you accept it as a problem. कुछ भी तभी समस्या बनती है जब आप उसको समस्या स्वीकारते हैं. So you shouldn't worry about what people think. You shouldn't worry about what people think. आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए. But you can do something. लेकिन जब हम कुछ करते हैं, We should look at it and see if truly we are doing such things and try to adjust ourselves. तो हमें यह देखना चाहिए कि हम सही में कार्य कर रहे हैं और अपने आप को उसके अनुसार ढालना चाहिए. If we do not, just take it like that. What can be done? और अगर ऐसा नहीं है तो स्वीकार कर लीजिए, अभी क्या किया जा सकता है. Don't make it a problem. उसे समस्या मत बनाइए. Let the person deal with it. वे भक्तों का अपना अपना मत हो सकता है. Maharaj, one more question. Shri Maharaj, many times in our association of devotees, there is a wonderful culture of appreciating devotees. Devotees do like Lord Ram was appreciating the squirrel service. So similarly, when we also do small seva, we are appreciated a lot. But sometimes we are misjudged, or sometimes devotees misunderstand us and they criticize us or criticize our seva. The natural tendency is that we forget all the appreciation which was given to us and we only focus on the criticism that was made upon us, and we keep on thinking about it and we take it very, very seriously. So Maharaj, how to overcome this problem? प्रश्न है कि महाराज कई बार हमें बहुत प्रशंसा दी जाती है भक्तों के संग में हमारी सेवा के लिए, और कई बार भक्त गलत समझ के हमें कभी डांट भी देते हैं या गलतियां भी ढूंढते हैं. लेकिन स्वभाव ऐसा है कि हम प्रशंसा को भूल के केवल गलतियों की ओर ध्यान देते हैं. तो इसको कैसे, इसके ऊपर कैसे उभरा जा सकता है? In the Bhagavad Gita, Lord Krishna told us, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, don't rejoice when something wonderful happened. Don't rejoice. जब कुछ अच्छा हो तो आनंदित मत होइए. Because if you rejoice when something palatable happens, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा होने पे आनंदित होंगे if you don't want to lament, अगर आपको दुखी नहीं होना है तो सुख में आनंदित भी मत होइए. a person who can accept all equally is धीरा. Sthita Pragya. एक व्यक्ति जो सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार कर सकता है वह स्थित प्रज्ञ है. So Bhagavad Gita wants us to be a Sthita Pragya. भगवद गीता में भगवान हमें स्थित प्रज्ञ होने के लिए कह रहे हैं. That requires training. उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, It requires discipline. उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, And it is necessary. और यह बहुत आवश्यक है. So here Krishna is showing us where we are. तो यहाँ भगवान हमें दिखा रहे हैं कि हम कहाँ हैं. That our service is not pure yet. कि हमारी सेवा शुद्ध नहीं है. Therefore, इसलिए we are rejoicing with appreciation. जब प्रशंसा होती है तो आनंदित होते हैं. And when little complaint comes, oh, why did you say this to me? और कभी थोड़ा सा भी अगर शिकायत होती है तो हम दुखी हो जाते हैं. अरे मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? Which is false ego. यह सिर्फ अहंकार है. False ego means I am the body. अहंकार का अर्थ है मैं यह शरीर हूँ. This body is me. मैं यह शरीर हूँ. So everything in this body is me. इस शरीर से जुड़ा सब कुछ मैं हूँ. And I have to enjoy it, me. I have to enjoy me. और मुझे इसका भोग करना है. Anything that goes against it, no, it's not good. और जब भी कुछ इसके विरुद्ध जाता है तो हम उसको स्वीकार नहीं पाते. Duality. It's duality.
ये जो द्वंद्व है, So Krishna is telling us we try to transcend duality भगवान हमें कह रहे हैं कि हमें इन द्वंद्वों से ऊपर उठना चाहिए, so that ताकि whatever comes we are equal to it. जो भी आए हम उसमें समान रह सकें। We have a lot of work to do. हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना That is the message Krishna is sending to us. We have a lot of work to do. है। यह शिक्षा हमें भगवान भगवद गीता में दे रहे हैं। All right? Hare Krishna Maharaj, thank you very much for a very inspiring class. Maharaj, I wanted to ask, how, did you feel so special about this Krishna conscious movement and ISKCON than the other paths which you would have studied, Bible, Quran, and other, even of different religion and from different country? You felt so inspired that you are here addressing us also. So, what did you find so special in ISKCON and Krishna conscious movement? कृष्ण जी महाराज, आपको इस्कॉन और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इतना आकर्षक लगा, जो आप अपितु एक दूसरे देश से हैं, आप इसके प्रति इतना आकर्षित हो गए और आपने इसको इतनी तीव्रता से पालन किया? Of the many religious organizations I have passed through, ये बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा, the philosophies I have passed through, जितने भी सिद्धांत हैं जिनसे मैं जुड़ा, only Krishna said, I am the father of all living entities. Only Krishna said that. सिर्फ कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवात्माओं का परम पिता हूँ, Nobody said that. और कोई यह नहीं कहता, Only Krishna said that. सिर्फ कृष्ण कहते हैं I am the seed-giving father of all living entities. मैं सभी जीवात्माओं का बीज प्रदाता परम पिता हूँ। That is powerful. बहुत शक्तिशाली है ये, Very powerful. बहुत So शक्तिशाली। Brahma didn't say that. और किसी ने नहीं कहा, Or Shiva didn't say that. ब्रह्मा जी, शिव जी, उन्होंने भी नहीं कहा, Vishnu didn't say that. विष्णु ने भी यह नहीं कहा, Only Krishna said that. सिर्फ कृष्ण ने ये कहा है I'm the father of all living entities. कि मैं सभी जीवात्माओं का परम पिता हूँ, All are mine. सभी मेरे हैं। And not just speaking like that, Krishna exists equally in all species of life. भगवान सिर्फ कह नहीं रहे हैं, भगवान सभी जो योनियां हैं उसमें समान रूप से है। See, we see unity in Krishna consciousness. हम इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में एकता देखते हैं। In Krishna consciousness, everything becomes meaningful. कृष्ण भावनात्मक में सब कुछ अर्थ, There are so many things, but they are all here and there. But in Krishna consciousness, everything becomes meaningful. बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये सब तितर बितर है, लेकिन कृष्ण भावनात्मक में सब कुछ अर्थवान है, सब कुछ चीज का अर्थ है। Okay. श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताई गौर प्रेमानंद।